सुप्रीम कोर्ट सर इस लॉ ने आर्टिकल रूल 9 को ऑब्लिटरेट कर दिया है और आपने इंडिविजुअल लेवल पे जजमेंट दिए हैं जहाँ पे रूल। एक सेकेंड इम्तियाज साहब, सर आप मुझे एक सेकंड ना कीजिए, मुझे सुनने मेरी बात। सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार डाइल्यूट हुआ है ना सर। आपने चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपनी जजमेंट में कहा है कि रूल 9 जो है उसके तहत रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती जब तक चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं। और ये जजमेंट आने के बाद ये फील्ड अनऑक्युपाइड नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द अदर जजेस? नो। फिर कैसे रूल में सुप्रीम कोर्ट को अलग करके इख्तियार दिया गया? सर आपने सरेंडर किया है, इख्तियार देना है कलेक्ट। आपने मुख्तार बनाया चीफ जस्टिस को कि हम चीफ जस्टिस की इस बात को हम ऑथराइज करते हैं। क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया? सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है। 180 में आप फॉलो करते रहे हैं जो जजमेंट आपने जजमेंट दी है कि चीफ जस्टिस साहब बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। जजमेंट की बात कर रहा हूँ जो जजमेंट्स आई थी वो इस एक्ट से पहले थी और वो दैट वाज बेस्ड अपॉन द रूल्स। अब एक्ट ज्यादा बड़ा है और बड़े। सर आप जजमेंट तो पढ़ ले। आपने कहा है कि ये रूल्स जो हैं ये हायर पेडिस्टल पे हैं, पर वो ये आपकी जजमेंट है। साहब आप फुल कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं। जजमेंट कितने मेंबर्स की है सर? जजमेंट कितने मेंबर्स की है? 10 मेंबर्स। 10 हम कितने हैं? 14। अच्छा इम्तियाज साहब ओवररूल करना पड़ेगा सर, रीजंस देके। इम्तियाज साहब नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो रीजन। इम्तियाज साहब ठीक है, not that easy. इम्तियाज साहब, I wish things were as easy as your lordship has put it. It is not. Sir, अल शमरेज केस के बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की एक स्टैट्यूट में। अल शमरेज केस का इफेक्ट खत्म हो गया ना, जजमेंट को नहीं हाथ लगाया। ओहो, उसका that law finished to an end and that is the authority of the parliament. सर आप कोई और बात कर रहे हैं, वो बात कानून की है सर। allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, a law, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. With retrospective. Yes, the distinction here is that here the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the this power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules. So it's not that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. That's in very. That's the precise submission I'm trying to make. With the doctrine of separation of and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my Lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And the judgments argue करिए अपना केस, and आप अपना केस argue करिए. My case has been allow me to give your lordship a judgment on the issue. आप कितना वक्त और लेंगे? बस 15 मिनट और दे दूंगा अगर क्वेश्चंस ना हो तो। ठीक नहीं Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161. Father Kasadari case.
Malik Asad Ali, Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. Or the question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your lordship has already said. So, So- now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice, upon the don't interrupt till I finish the question, upon retirement of the Chief Justice? Have I understood you correctly? No, my lord. Your lordship is not. Then your lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is... Convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. But Lord, So this it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the... बात हो रही ना, असूल की बात हो रही ना, सर, असूलों की बात हो रही असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है, आप खुद बता है। ओके, आगे बताएं। आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक आगे चलेंगे। बताएं, जी सर, आगे बढ़िए। Similarly, your lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law. And कौन सा जजमेंट है? my lord, proceed. 2010, my lord. And why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made by a constitutional body and Subject to law. This is part of subject to law की बात है। साइटेशन तो दे देना 2010 कुर्सी दे दो। 2010 सर मैं भी दे रहा हूँ। इम्तियाज साहब, सर दे दे, मैं इधर पढ़ लेता हूँ, आप बता दें। एक सेकंड। this is a constitutional body and the Parliament Majlis Shura, that is not, 2010 which has the citation? exclusive power to make laws. इसी में? SCMR रेडी 2010 SC 483 विंटर का अलग केस। इस जजमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें? सर इस जजमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं कहाँ, किस पेज पे, किस पैराग्राफ में? the relevant page is page 535 535 and it goes on to page नहीं, हमें रेलवेंट पढ़ दीजिए। 535 कहाँ लिखा है ये? it goes on to page 536. The Supreme Court rules. Thank you. देखना पसंद करेंगे सर किताब? The Supreme Court rules. पेज क्या होता है? पेज क्या क्या? Page Supreme Court rules are on high 5, pedestrian 3, promulgated on the 5, basis of mandate given by the Constitution and not by the government. हाँ, so how does it say it's higher than a law? वो कहाँ लिखा है? The Supreme Court rules on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to enhance the power of review as conferred by the Supreme Court rules under Supreme Court under Article 180 of the Constitution. अच्छा, इसमें दो बुनियादी बात हैं जो आप कह रहे थे उसके बरक्स है, और दूसरी बात है whereof was to enhance the power of review. सर तो ये तो enhance कर दिया था power of review ने। सर ये क्या है, ये लॉ का तो नहीं इसमें जिक्र, शायद कहीं और हो, मुझे नहीं पता। नहीं सर, इसी जजमेंट को पढ़ें अगर आप डिटेल में, कहने मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इसमें नहीं, ये काम नहीं होता है वकील का। वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफ़े पे इस पैराग्राफ में। ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें।
रानी साहब मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पेज बता दीजिए प्लीज। सिर्फ पेज बता दें, हम पढ़ लेंगे खुद। वहाँ इस पे ये बात नहीं लिखी है जो आप कह रहे हैं इस पे। 536 हाँ, ये मैंने पढ़ ली। चलें अगला बताइए केस। अपनी जजमेंट लीजिए। PLD 1997 Supreme Court 426. Achak is case, my lord. PLD 1997 Supreme Court 426. Relevant 5 and 9. 1997 PLD Supreme Court. जी सफा 5 and 9. 511, page 511, 511. Tell 5 and Salim Akhtar gives लेंगे 7 and 511, page 511, 511. Tell 5 and Salim Akhtar gives लेंगे 7 and Perfect. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with the proposition and still dismiss your petition. No, I'm just saying, so I don't know there's anything clincher here in your favor. It says these are inbuilt limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहला बात है कि separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. May look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड, दूसरा बता रहे हैं PLD? PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Ziaur Rahman's case. 73, 79. 73. My lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page? Relevant page is 68. 68. Then it is from 68 to 70, my lord. To 70. ठीक. And इसी proposition पे. His Lordship, Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक. Paragraph 70 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर, अगर इजाज़त दे. ठीक. May I read, bro? May I read? ये आपने कहा यही proposition है. Yes, sir. तो हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ना चाहते पढ़ लें. पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज. My lord, page 70. जी. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. होती है. Yes, जो होता है. Enabling लेकिन कहाँ provision पे just. है? It is an enabling provision. How it is applicable here? ठीक. My lord, और कोई केस? it says, और केस? PLD 1998 Supreme Court 161 में sir
Independence judiciary is a fundamental right. Page क्या बता दे? Supreme Court Page 161. 161, 98 Supreme Court. His Lordship. Relevant? Relevant is page 189, जी 247. यही बात है अलग? Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution. Any deviation amounts to deviation from the constitution. 321, page 331. ठीक. Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अच्छा, अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, भी कवर कर लीजिएगा। अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं, वो फिर चले जाएंगे। फिर आपकी एक जजमेंट पढ़ना चाह रहा था। नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर अभी क्योंकि कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। नहीं, ठीक है, आपने कहा है डिपेंडिंग ऑन रूल। हो सकता है गलत कहा हो, गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है। मगर हम जरा अटॉर्नी जनरल को अगर आप लोग अग्री करें शॉर्ट ब्रेक करने के बाद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपको कहीं जाना है, एक सेकंड, इनके भी हम आपको फिर देंगे हियरिंग, ये नहीं समझें कि आपको हम बंद करें। आई एम डन माय एक आपको कहीं जाना है? My lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow. So I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My lord, today, sir, my submissions will be precise. I've already filed my written brief. It will take 30 minutes, and then whatever questions towards the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes by the clock. There's vast be right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a... ठीक है, तो I think we'll take a short break. My lord. आप ठीक है, आप अग्री करते हैं? नहीं, ये आप इनकी भी बातें सुन लीजिए। Do I have a choice? I don't have a choice. No, I don't have a choice. You have a choice. You're most kind. If you agree with me, I'll be obliged. It's a rare. We will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. नहीं, आपने बड़े Otherwise, from morning I have not been agreeing with your lordship. तो आप we will let's say we'll come back at 3 or 10 to 3 कर लेते हैं। 10 to 3. ठीक है? My lord, grateful. चलिए 3 o'clock कर लेते हैं, ठीक है? आप अभी जरा पॉइंट्स भी नोट करते जाएं, सवालों के जवाब। अगर फिर आपको सुनेंगे, ये ना समझेंगे। I have just one request. मगर नहीं, तो your lordship will give him as similar tough time as your lordship has given me. No, I will try not to interrupt him because I'll tell you why. He's representing Pakistan. Interest of the country is the Indus Water Treaty is a very sensitive thing. So we don't want to create a situation where he can't go. I will request my colleagues and I will also restrain myself. If we have queries, like he said, do you have some additional or someone here? Mr. Amir Rahman is here. Amir Rahman is a competent additional Advocate General. So he will make note of the questions and he will either respond himself or the Attorney General can even call him from, I don't know, wherever he is. ठीक है, तो इनको जरा हम फारिग कर दें, फिर हम जरा तसल्ली हो जाएगी, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। I am at your disposal. शुक्रिया बहुत बहुत। Grateful. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट समाअत जारी थी। समाअत के दौरान अभी वक्फा किया गया है और मनाजरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समाअत जारी थी और मुख्तलिफ नौयत के दलाइल भी दिए गए हैं। अब तक की कार्रवाई से मुतलिक आपको बताएं कि दलाइल के दौरान ये कहा गया कि पार्लियामेंट चीफ जस्टिस की पावर को खुद रेगुलेट नहीं कर सकता। वकील इम्तियाज सदीकी की जानिब से नुक्ता उठाया गया, पार्लियामेंट ने कानून के जरिए आपको अपील का हक दिया है। जस्टिस मियाँ मोहम्मद अली मजहर की जानिब से इस पर यह कहा गया, अपील